Good morning students, this is our second lecture of object-oriented programming with C++. In last lecture we have seen some of the concepts of C++ and that are classes and objects. So in this lecture we are going to learn the next about the concepts and some other concepts. So next concept of object-oriented programming is data abstraction and encapsulation. So what is mean by data encapsulation? The wrapping up of data and functions into a single unit is known as encapsulation. As we have seen class in the last lecture, I already have told you that class is a collection of data and its related functions. So this characteristic of class is called as encapsulation, and the data whichever is in the class cannot be accessible to the outside world. That means the data in the class cannot be used by the other functions outside the class. The only those functions which are wrapped in the class can access the data in the particular class. These functions provide the interface between the object's data and the program. This insulation of data from direct access by the program is called as data heading. So we have seen this concept, that is the data heading, in last lecture. So the class which contains the functions and its related data, and the property of that class, this property of class is known as the encapsulation. जो भी डेटा आपके क्लास में है वो डेटा बाहर किसी भी फंक्शन में यूज नहीं हो सकता है, कोई भी फंक्शन बाहर का उसको एक्सेस नहीं कर सकता है. ओनली द फंक्शन इनसाइड द क्लास, that only can access the data of the particular class. And this feature, the wrapping up of data and functions together in a single unit, is known as the encapsulation. Then second concept of this is data abstraction. So in Hindi में अगर आप या फिर मराठी में abstraction, abstract means summary. So here data abstraction, it refers to the act of representing essential features without including the background detail. अब C++ में ऐसा होता है कि क्लास का डिक्लेरेशन एक फाइल में होता है जिसमें सिर्फ फंक्शंस के नाम और डेटा जो है वो लिखा जाता है, और दूसरे फाइल में उसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन, दैट मीन्स द कोडिंग ऑफ द फंक्शंस इज रिटन इनटू द नेक्स्ट क्लास. एंड द यूजर्स, जो भी यूजर्स है वो यूजर्स उसको सिर्फ यूज करते हैं, दे डू नॉट नो अबाउट द एक्चुअल वर्किंग ऑफ द फंक्शन. जैसे कि हम सिर्फ यूज करते हैं, जैसे एसक्यूआरटी फंक्शन, वी आर सिंपली यूजिंग द एसक्यूआरटी फंक्शन, वी डोंट नो हाउ इट कैलकुलेट्स द स्क्वायर रूट. दैट मीन्स आपको उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं पता है, वी आर ओनली सिंपली यूजिंग इट. सिर्फ हमको इतना पता है कि स्क्वायर रूट निकालना है तो हम यूज करेंगे एसक्यूआरटी फंक्शन. सो दैट मीन्स कि it refers to, abstraction refers to the representing essential features without including the background details. बैकग्राउंड में एसक्यूआरटी क्या करता है ये मुझे पता नहीं है, so मैं सिर्फ उसको यूज करती हूँ. सिमिलरली that was about the built in types, but हम भी खुद ऐसे डेटा टाइप्स या फिर खुद ऐसे क्लास बना सकते हैं जो कि अदर जो पीपल है वो यूज करेंगे, उनको पता नहीं रहेगा कि ये फंक्शन एक्चुअली वर्क कैसे करता है, दे आर सिंपली यूजिंग दैट फंक्शन. So this property is known as the data abstraction. Classes are the concept of abstraction and are defined as the list of abstract attributes and functions. To operate on these functions, the attributes are called as data members and the functions are called as the member function. Whichever data is included in the class, that are called as the attributes, and the functions in the class are called as the data members. Member functions. Attributes या फिर data, it is called as data members and the functions are called as the member function. Since the classes use the concept of data abstraction, they are also known as the abstract data types. So classes can be used as or can be called as the abstract data types because it uses the data abstraction in its implementation. So next very important feature of C++ is the inheritance. So inheritance is a process by which objects of one class acquire the
properties of objects of another class. So inheritance means creating a new class from the old class. Yeah. That means it is a process by which object of one class can acquire the properties of objects of another class. In object-oriented programming, the concept of inheritance provides the idea of reusability. रीयूजेबिलिटी यानी आप जो भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लास है उसको रीयूज करके फिर एक नया क्लास बना सकते हैं, जिससे कि नए क्लास में खुद के भी फंक्शंस होंगे और जो आप जिस पर से आपने वो क्लास बनाया है उसके भी फंक्शंस और डेटा मेंबर्स आप यूज कर सकते हो. This means that we can add additional features to an existing class without modifying it. Yeah. This is very striking feature of C++ that if you want to change your program, or if you want to add some programs, add some functions into your class, then you can easily add with the help of inheritance. यानी आपको जो already existing class है उसको यानी change करने की जरूरत नहीं है, नया class बना के ओल्ड क्लास से नया क्लास बना के आप इनहेरिट कर सकते हो. लास्ट क्लास जो ओल्ड क्लास के हैं फंक्शंस वो भी यूज कर सकते हैं, उनके डेटा भी यूज कर सकते हो. सो दिस इज पॉसिबल बाय डिराइविंग अ न्यू क्लास फ्रॉम एक्जिस्टिंग वन. सो जो भी अगर आपको एक्जिस्टिंग क्लास के फंक्शंस यूज करने हैं दूसरा नया क्लास में जिसमें नए भी है और लास्ट वाले में है, so it is possible by deriving a new class from existing one, and the new class will have the combined features of both the classes. The power of mechanism of inheritance is that it allows the programmer to reuse a class that is almost but not exactly what he wants. अगर आप inheritance use करते हैं तो आप उस पर रिस्ट्रिक्शंस भी डाल सकते हो कि आपको कौन सा डेटा यूज करना है नए क्लास में और कौन सा डेटा यूज नहीं करना है, कौन से फंक्शंस नए क्लास में चाहिए और कौन से फंक्शंस नए क्लास में नहीं चाहिए. सो ये जो फैसिलिटी है ये कैसे करना है हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना समझ लो कि व्हाट इज मीन बाय इनहेरिटेंस. सो इनहेरिटेंस इज वेरी सिंपल. इट इज क्रिएटिंग अ न्यू क्लास फ्रॉम द ओल्ड क्लास, जिसमें अगर आप जो भी नया क्लास बनाते हो उसमें नए फंक्शंस भी रहेंगे उसके खुद के, और जो ओल्ड क्लास है उसके फंक्शन भी रह सकते हैं. So this is about the inheritance. So next feature of object oriented programming, that is the polymorphism. So polymorphism, it is a Greek term, and its meaning is the ability to take more than one form. An operation may exhibit different behaviors in different instances. Behavior depends upon the types of data used in the operation. अब पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है एबिलिटी टू टेक मोर देन वन फॉर्म. यानी जैसे कि सपोज एक फंक्शन है, एक फंक्शन का काम सेम, नेम सेम है, फंक्शन का नेम सेम है, लेकिन अकॉर्डिंग टू डेटा टाइप्स उसने काम आपको चाहिए कि अलग अलग करने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल ये आप एक सिंपल एग्जाम्पल दिया है, फॉर टू नंबर्स द ऑपरेशन विल जनरेट द सम. कंसिडर करो एक फंक्शन है ऐड नाम का फंक्शन है. सो ऐड फंक्शन है जिसमें अगर आप दो नंबर्स पास करते हो तो दैट फंक्शन will calculate the sum, will generate the sum. But if you pass the two strings, then the operation will produce a third string by concatenation. इसका मतलब है फंक्शन का नाम वही है लेकिन अकॉर्डिंग टू डेटा टाइप्स, अकॉर्डिंग टू द ऑपरेंड्स, इट यानी चेंज करता है, बिहेवियर चेंज करता है. दो नंबर अगर है तो एडिशन देगा, दो स्ट्रिंग्स अगर है तो उनका कॉन्केटनेशन देगा. इसका मतलब यही हो गया कि नाम सेम है लेकिन उसके फॉर्म्स दो हैं according to the data types. So this process of making an operator, so this process is known as the polymorphism. And the same process जो कि फंक्शन में हो सकती है वो भी आप ऑपरेटर के साथ भी कर सकते हो. इट इज नोन एज ओवरलोडिंग. अगर फंक्शन के साथ होता है इट इज कॉल्ड एज फंक्शन ओवरलोडिंग. सेम फंक्शन है, बिहेवियर डिफरेंट है तो उसको बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग. लेकिन अगर सेम प्रोसेस आप ऑपरेटर के साथ करते हो, जैसे कि सपोज प्लस ऑपरेटर जनरली यूज्ड टू ऐड द टू वैल्यूज, बट सेम ऑपरेटर कैन बी यूज्ड टू ऐड द टू ऑब्जेक्ट्स आल्सो.
दो ऑब्जेक्ट्स को भी सेम ऑपरेटर ऐड कर सकता है. So that this means we are giving two means for the operator. So plus can operate on values also, plus can operate on the objects also. Yeah. So this concept is known as the operator overloading. So that complete mechanism, that complete concept is called as the polymorphism. So same is explained in the next para also. Similarly, single function name can be used to handle different number and types of arguments. This is something similar to a particular word having different meanings depending on the concept. Using a single function name to perform different types of tasks is known as the function overloading. फंक्शन का नाम सेम है लेकिन उसके आर्ग्यूमेंट्स अलग है, वैल्यू अलग रिटर्न करता है. सो दैट इज कॉल्ड एज द फंक्शन ओवरलोडिंग. Add function can be declared to have the two integer arguments, to have the two string arguments, to have the two class objects, etc. and etc. So this task is known as, or this process is known as the function overloading, and polymorphism can also be achieved with the help of operator overloading. Then next concept is message passing. So message, actually here message means function. Message means a function. So what is meant by message passing? An object oriented program consists of set of objects that communicate with each other. The process of programming in an object oriented language therefore involves the following steps. So अगर आपको मैसेज पासिंग करना है या फिर उसी को बोलेंगे हम फंक्शन कॉलिंग. मैसेज पासिंग मीन्स communicating with the function, communicating with the object. So if we want to do the message passing, we have to involve the following steps. Creating classes that define objects. Firstly, we have to create the class. Yeah. Then secondly, creating objects from class. Then we have to create the object. And next thing is establishing communication among objects. So that means establishing communication among objects means calling a function through the object. Yeah. For example, here one example is given that emp1.salary in bracket name. Here emp1 is the object and salary is the function. That means it is the message. Yeah. So we are passing a message salary to the object emp1. So here objects communicate with one another by sending and receiving information much the same way as people pass messages to one another. So here a message for an object is request for execution of a procedure. That means message is a request for execution of a particular function, and therefore will invoke a function in the receiving object that generates the desired result. So here one example, as I have told you, so here message is the salary, message means here the function. So that salary function will be invoked by the object emp1 and it will send an argument that is the name. So here we have completed the concepts of object-oriented programming and we are going to learn actually the C++ programs. Object-oriented program हम देखने वाले हैं वो है C++ program, C++. So here is the structure of C++ program. A typical C++ program would contain 4 sections as follows. So जो 4 सेक्शन दिए हैं वो 4 सेक्शन हर एक C++ प्रोग्राम में होते हैं. Firstly is the include file section, next one is the class declaration, third one is member function definition and fourth one is the main function program. So मैंने यहाँ पे जो दिए हैं वो चारों भी एक साथ भी हो सकते हैं फाइल में या फिर चारों भी आप अलग-अलग फाइल्स में भी लिख सकते हो. So first section is the include file section. So include file section में आते हैं hash include, जैसे कि आपने लास्ट ईयर सी में भी किया था. hash include और header files, जो भी आपको फंक्शंस लेने हैं, जो भी आपको क्लासेस चाहिए, वो जो भी हेडर फाइल में है वो फाइल्स आपको सबसे पहले इंक्लूड करनी पड़ेंगी विद द स्टेटमेंट hash include. Then next one is the class declaration.
सो क्लास डिक्लेरेशन कैसे करना है हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए क्लास डिक्लेरेशन में क्लास और क्लास का नाम और उसमें जो भी डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस है वो सभी का डिक्लेरेशन होता है। देन नेक्स्ट विल बी द मेंबर फंक्शन डेफिनेशन। मेंबर फंक्शन डेफिनेशंस मींस जो भी फंक्शंस आपने क्लास में डिक्लेयर किए हैं उसका एक्चुअल कोडिंग, उसका एक्चुअल प्रोग्राम जो है वो हम लिखेंगे मेंबर फंक्शन डेफिनेशन में। और लास्ट विल बी द मेन प्रोग्राम जहाँ पे हमको आपके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हैं, क्लासेस के फंक्शंस यूज करने हैं। सो दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ अ कॉमन C++ प्रोग्राम। जैसे कि मैंने बताया कि ये तीनों क्लास डिक्लेरेशन, मेंबर फंक्शन डेफिनेशन और मेन फंक्शन प्रोग्राम, आप तीनों भी अलग अलग फाइल्स में भी लिख सकते हो या फिर एक फाइल में भी रह सकता है। सो C++ प्रोग्राम में सबसे पहले, कंपलसरी नहीं है लेकिन सबसे पहले हो सकते हैं कमेंट्स। सो कमेंट्स मीन्स जो भी चीज यूजर को अपने लिए लिखनी है, just for saying the this loop is for or this program is written by, ऐसे जो भी यूजर को अपने लिए लिखना है, प्रोग्राम के लिए, प्रोग्राम में एग्जीक्यूट नहीं करवाना है, उसको बोलते हैं हम कमेंट। सी में भी हमने कमेंट्स लिखे थे, C++ में भी सेम कमेंट है जैसे हमने सी में लिखा था, जैसे कि यहाँ पे लास्ट एग्जांपल दिया है स्लैश स्टार और स्टार स्लैश के बीच में आप जो भी लिखते हो वो कंपाइलर एग्जीक्यूट नहीं करेगा, इट इज ओनली फॉर द यूजर। जैसे कि यहाँ पे स्लैश स्टार और स्टार स्लैश के बीच में लिखा है दिस प्रोग्राम इज टू इलिस्ट्रेट द यूज ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग। सो दिस इज कॉल्ड एज मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट यानी यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन्स हो सकती है, जितनी भी लाइन स्लैश स्टार और स्टार स्लैश के बीच में है वो सभी कमेंट्स करके कंसीडर होगी, कंपाइलर एग्जीक्यूट नहीं करेगा। सो C++ में एक ज्यादा का कमेंट है दैट इज द सिंगल लाइन कमेंट, दैट इज डबल स्लैश। डबल स्लैश के सामने आप जो भी लिखते हो वो कमेंट करके कंसीडर होगा, एक ही लाइन सिंगल लाइन जहाँ पे आपने डबल स्लैश लिखा है वो कमेंट कंसीडर होगा, कंप्यूटर एग्जीक्यूट नहीं करेगा। सो नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द आउटपुट ऑपरेटर। जब सिंपल प्रोग्राम्स में हमको जो भी हमने कैलकुलेट किया है वो डिस्प्ले करवाना है तो उसके लिए C++ में यूज होता है आउटपुट ऑपरेटर, एंड दैट ऑपरेटर इज हियर द स्टेटमेंट सी आउट, दिस ऑपरेटर less than sign 2 times, this is called as the output operator। सो जो भी इसके सामने डबल कोटेशन में लिखा हो या फिर वेरिएबल लिखा हो वो स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। जैसे कि सिंपल एग्जांपल दिया है यहाँ पे सी आउट देन ऑपरेटर डबल कोटेशन में C++ is superset of C, so this string which is included in double quotation mark will be displayed on the screen। So we can display string also, we can display values of variable also। So values of variable, if you want to display the values of variable then simply write the name of variable। So here the statement introduces two new C++ features, cout and this operator। So cout is predefined object that represents the standard output stream in C++। यहाँ पे जो cout लिखा है वो cout it is the predefined object जो कि है iostream.h नाम के फाइल में। So अगर आप ये यूज करते हो तो we have to include the iostream.h, and then that operator less than का sign to 2 times, it is called as the insertion or put to operator, and it inserts the contents of variable in its right to the object on in its left। यानी जो भी जैसे cout x लिखा है तो x की वैल्यू जो भी है वो x की वैल्यू वो इस ऑब्जेक्ट में cout ऑब्जेक्ट में क्या करेगा, इंसर्ट करेगा। और cout ऑब्जेक्ट इज रेफर्स टू द स्क्रीन, यानी x की वैल्यू कहाँ पे डिस्प्ले होंगी, आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होंगी। सो और ये जो ऑपरेटर है वो ऑपरेटर कैस्केड भी हो सकता है, दैट मींस यू कैन यूज द ऑपरेटर नंबर ऑफ टाइम्स। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में लिखा है cout sum is equals to s, again operator is cascaded, average equals to again it is cascaded, and e। जो भी वेरिएबल एक
number of values या फिर number of constants अगर आपको लिखने हैं तो it should be separated by the same operator. So this is called as the cascading of operator. And the output of this statement, C out sum is equals to, so output of this statement can be as follows. Sum is equals to 12 and average equals to 6. So this is about the output operator. Then next is, that is the input operator. If you want to input the value through the keyboard, कीबोर्ड से अगर आपको कुछ वैल्यूज कंप्यूटर को प्रोवाइड करनी है, then input operator is used. Input operator is greater than sign 2 times. It is an so and cin operator and variable name. This statement is an input statement and causes the program to wait for the user to type in a number. So the number keyed in is placed in the variable number. Whichever variable you have write in the cin statement, in that variable that value will be inserted. The identifier cin is a predefined object in C++. So same as cout, cin is also a predefined object in C++ which is defined in iostream.h. So here this string represents a keyboard, cin represents the keyboard. That means whichever value you will give to the computer, it will be given by the keyboard. And the operator is called as extraction or get from operator. That operator is called extraction or get from operator. It extracts the value from keyboard and assigns it to variable on its right. And this can be cascaded as follows: cin operator, num1 operator, num2 and so on. Means variable are not separated by comma, but it is separated by the operator, that input operator. So this is about our second lecture. Okay, thank you.